हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक Yes, very good evening and the warmest welcome to the 48th round robin league match of the Lakshmi Lila Group GSC 45 plus T20 League Season 7. The last league match of the tournament. The result of this match will decide which team makes it to the semi-finals of the Gold Play Championship. That is the contest between the teams that are placed at the number 5, 6, 7 and 8 positions. Team challengers have won 7 matches out of 7. They are the only team in the tournament that has a 100% winning ratio. They have played some extraordinary cricket and they are the team to beat. Tonight, Team Tigers are up against Team Challengers. So it's going to be hell of a ask for Team Tigers. They have to win this match in any case if they have to qualify for the semi-finals of the Gold Cup. So yes, tonight Team Panther Kings will be on the edge. They defeated Team Tigers yesterday. So if Team Tigers loses the match tonight against Challengers, which can happen, then Team Panther Kings make it to the semi-finals of the Gold Cup Championship. If Tigers play their best cricket if they happen to defeat Team Challengers tonight, they make it to the semi-finals of the Gold Cup. So quite an interesting scenario. On the other hand, the Team Challengers is the number 1 team on the points table with a 100% winning ratio. So they have an extraordinary chance to go the distance. They will be playing the qualifier number 1 against Team Warriors. Requesting both the teams to please come for the toss. As the toss ka boss, we have with us the convener of the Lakshmi Lila Group GSC 45 plus T20 League. That's Prasad Karkera. And we also have one of our key members. That's Monish Shah. Hemal Dave to my right and to my left it's going to be Hemant Moite. Toss time. Who's going to be taking the call? Hemant Moite to take the call. Heads is a call and it is tails. Hemal. We will field first. Tonight you have to forget everything and play your best cricket. इस मैच को जीतते हो प्रसाद करकेरा का दिल टूटेगा लेकिन आपको वो सेमीफाइनल खेलने को मिलेगा. So yes, that is Hemal Dave and they're going to be fielding what's the kind of score you want on the board. I'm sure that you all will not be lethargic. You all want to get into the qualifier number 1 with 100% winning ratio. That gives you an edge. So what is the score you want to be putting up on the board? We will be looking for at least around 180, 185. We will not be a bit any complacency. We will not show any complacency, and we will play to our strengths. Batting is our strength, and we will try to defend it. We will definitely defend it against them. He said he's going to definitely defend it. So it's going to be a contest here. Time for both the teams to align together for the customary team snap. दोनों ही टीम्स इकट्ठा आएगी, हम अलाइन करेंगे साथ में वो हमारे कस्टमरी टीम स्नैप के लिए जो हमेशा होता है और फिर हमारे राष्ट्रगान को हम सलामी देंगे. स्वागत है प्रमोद भाई गुप्ता का. आ जाओ
Half the team, if 3-4 of you all can kneel down, at least we will look in sync. अशोक भाई ये बाजू रनिंग बिटवीन द विकेट्स के सिवाय सभी कुछ बढ़िया है. कल एक अच्छा नॉक खेला अशोक भाई ने. वन विद द थम्स अप. गणपति बप्पा. चलिए राष्ट्रगान को सलामी देते. आवर कैप्स एंड हैट्स विल बी अवे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. The umpires will take the field at 5 minutes to 7 and 7 o'clock we bowl that first delivery on the dot. Thank you. Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least,
पेन किलर्स पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
सुस्वागतम आप सभी का लक्ष्मी लीला ग्रुप जीएससी 45+ T20 लीग 2025 के 40वें मैच में स्वागत है। दिलचस्प शुरुआत होती हुई अशोक खेडवाल ने नई गेंद का जिम्मा संभाला है। स्ट्राइक पर जॉन्टी पारेख और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर योगेश कोटक। जॉन्टी के लिए रनर के रूप में राजेश गाडगिल। आखिरी लीग मैच है दोस्तों ये। इस मैच का नतीजा ये तय करेगा कि कौन सी टीम गोल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी, टीम टाइगर्स या फिर टीम पैंथर किंग्स। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लेट्स रॉक एंड रोल। कल एक बहुत ही अच्छा नॉक खेला था अशोक खेडवाल ने, विकेट पे डटे रहे। हल्के हाथों से खेला, अपने खाते को खोला। लाइन अच्छी थी, लेंथ थोड़ी सी छोटी थी। दिलचस्प होगा देखना कि किस तरह से अपने स्पेल को अंजाम देते हैं अशोक खेडवाल। बड़ी जिम्मेवारी है उनके कंधों पर। एक अहम मैच में नई गेंद दी है, विश्वास जताया है थिंक टैंक ने। कितना खरे उतरते इस चुनौती पर, यह देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक पर वाईके। पहली ही गेंद पर अपने कंसंट्रेशन को खोया। मोमेंट ऑफ ब्रेन फेड टू द वेरी फर्स्ट डिलीवरी। दैट्स अ प्रोबिंग लाइन एंड लेंथ। Absolutely early days in this last round robin league match. 48 matches to be played and we are into the 40th match. 47 matches to be played overall. वाईके को पता है कि अगर अच्छे फॉर्म को बरकरार रखना है तो आज भी वो जो अपनी निर्धारित 36 गेंद है, उन 36 गेंदों का सामना करना अनिवार्य है। एक आधी अच्छी विकेट टेकिंग डिलीवरी पर अगर आउट होते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गलती की वजह से आउट न होना यह परम कर्तव्य है ओपनिंग बल्लेबाजों का। जॉन्टी पारेख ने भी इसके पहले के मैच में बड़ी शिद्दत से अपनी इनिंग्स को सजाया था और एक बहुत ही बढ़िया योगदान किया था। तो एक अच्छे ओपनिंग के विकल्प के रूप में उभर कर आते हुए अमित पारेख। हेमंत मोहिते को इस टूर्नामेंट में ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से अपनी टीम को लीड कर रहे, जिस तरह से को ओनर की भूमिका निभा रहे, काफी खुश है इस वक्त हेमंत मोहिते। अच्छी गेंद है। देखिए कितनी अच्छी लाइन पकड़ी अशोक खेडवाल ने। पहली बार इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी कर रहे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता हुआ कि करीबन हर मैच में नई गेंद के साथ गेंदबाजी की है। इस तरह का ये पहला शानदार ओवर किया अशोक खेडवाल ने। अपने अनुभव के बलबूते पर पूरी तरह से अपनी गेम को संवारते हैं। पहली ओवर के समाप्ति के बाद 200 रन संख्या, केवल 2 रन। इस मैच के टॉस को जीता, गेंदबाजी का चयन किया हेमल दवे ने, यानी कि टीम टाइगर्स ने। विपुल कल्याणी की अब आजमाइश होती हुई इन्फिनिटी एंड की तरफ से। ज्यादातर मैचेस में पहले ओवर को मुकम्मल किया है विपुल कल्याणी ने। आज की शाम 40वें लीग मैच में दूसरे ओवर को लेकर नई गेंद तो थमाई है कप्तान ने विपुल को। अच्छी गेंद और पूरा सम्मान दिया। भार्गव व्यास कवर्स के क्षेत्र में इनसाइड द सर्कल उस सिंगल सेविंग पोजीशन में उन्हें तैनात किया है।
Dead gain. लाइन अच्छी थी, टप्पा खाकर हल्की सी बाहर की तरफ निकली। तरुण कपूर विकेट कीपर है। हल्की सी अपील, उस रन को चुरा लिया। आंखों ही आंखों में इशारा किया राजेश गाडील ने योगेश कोटक को, और योगेश कोटक ने रिस्पॉन्स देते हुए उस एक रन को मुकम्मल किया। रन संख्या जा पहुंची है 5 रनों पर। दूसरे पीसीपीएल ओवर की 2 गेंद आनी शेष है। फ्लाइटेड गेंद और करारा जवाब दिया उस हाफ वॉली गेंद को। रिदम मोबाइल्स बाउंड्री फेंस की तरफ उठाकर खेला है। इतनी अच्छी टाइमिंग न होने के बावजूद मेरे ख्याल में उस फील्डर ने थोड़ी सी मिस जजमेंट की वहां पर, और गेंद फील्डर के पीछे गिरी। 2 पीसीपीएल ओवर्स की समाप्ति के बाद रन संख्या 10 रन उस रिदम मोबाइल्स चौके के साथ। समय हो चुका है कि हम हमारे टाइटल स्पॉन्सर लक्ष्मी लीला ग्रुप प्रवीण कोठारी वेंचर का धन्यवाद अदा करें। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की क्रिकेट कमेटी की तरफ से हमारे विकेट्स के स्पॉन्सर जेंसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी, बाउंड्रीज के स्पॉन्सर रिदम मोबाइल्स, सिक्सर्स के स्पॉन्सर कंफर्ट, ओवर्स के स्पॉन्सर पीसीपीएल। अशोक खेडवाल का स्पेल जारी रहेगा। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ टीम टाइगर्स को यह मैच खेलना होगा। मेरे ख्याल में किसी भी तरह से प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर प्रेशर लेगी तो अपना सर्वोत्तम क्रिकेट नहीं पेश कर पाएगी। और ऐसे आसार है, ऐसी उम्मीद है कि असलम भाई बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो वो एक एडेड बेनिफिट होगा टीम टाइगर्स को। दाद देनी होगी अशोक खेडवाल को कि इतने महत्वपूर्ण मैच में नई गेंद को थमाया है। राजेश सोनीग्रा को थोड़ा सा ब्रेक दिया है और अशोक खेडवाल को गेंदबाजी में उतारा है। थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से अपनी गेंदों को लगातार बिजनेस एरिया में लैंड कर रहा है, अच्छी शुरुआत अशोक खेडवाल के लिए। अभी तक नई गेंद के साथ काफी प्रश्न पूछे हैं अशोक खेडवाल ने। कोई भी लूज गेंद को पेश नहीं किया है, सटीक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए। मैंने जैसे पहले कहा कि मानसिक तरीके से बहुत ही मजबूत है अशोक खेडवाल। इतना क्रिकेट खेला है इतने सालों में। Dinesh Chaudhary, the lone ranger in that mid-wicket area. The score on to 13. We are into the third PCPL over. Quite an interesting start here for Ashok Kedwal. The way he's putting that new ball in the right areas and asking questions. That's just about what he's been asked to do.
आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को खींचा और क्या बढ़िया टाइमिंग, गेंद खराब नहीं थी लेकिन उस इंटेंट के चलते, उस इनिशिएटिव के चलते रिदम मोबाइल्स बाउंड्री को उजागर करते हुए प्राप्त किया है योगेश कोटक ने। योगेश कोटक हम सभी जानते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर है, ही विल ऑलवेज बैक हिमसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन टू कम गुड। Not so well timed. You'll have to wait and watch. That's a complete mess. Not easy to take those. So one will not want to be too harsh on the fielders there. 45 plus players. Not an easy catch to be taking. Till the time every single day you are ready to take those 30-40 catches, at least 15-20 catches in a day. It's not going to be easy in the match time. Once again, a very business-like start here for Team Challengers. They've already made it to the top position, but this match they want to keep that 100% winning momentum going for them. Prasad Karkera and Panther Kings are watching the match very closely. Once again, not too far away, but that's a shot which I think we have to give the credit to John Parekh for being in total control, walking the ball into that mid-wicket area for a very crisp rhythm mobiles boundary. With that boundary, the score is on to 25. We are into the fourth PCPL over. 3 balls left, ladies and gentlemen, boys and girls. Match number 40 of the Lakshmi Leela Group GSC 45 plus T20 League 2025. It's been a decent season for Vipul Kalyani. If not the very best season, not a bad one at all. So he's done the job, but I guess he would have wanted to do much more. That's the third time the ball has gone into that area in this over.
So that's not such a good thinking on the part of the think tank of Team Tigers. You want to be plugging that hole, or the bowler has to change his line. The captain and the bowler, you got to be on the same page. One more with the mobiles boundary to the credit of Yogesh Kotak. Takes the score to 30. One ball left in over number 4. He's taking some stick out here in this over, Vipul Kalyani. I mentioned earlier, Yogesh Kotak is an X-factor player. He's been in good form and is carrying that confidence into this innings. End of the fourth PCPL over. The scoreline reads 31 for none. A title sponsorship, Praveen Kothari. The pillar of strength to Lakshmi Leela Group, a Praveen Kothari venture. Thank you to Mr. Nikhil Patel, one of our senior members at the GSC PCPL, redeveloping homes, rebuilding communities. Mr. Anil Agarwalji, one of our senior GC members, for sponsoring the Sixers, that's Comfort Group. They deal in so many financial verticals. Kalpesh Shah, the boundary sponsor, that is Rhythm Mobiles. The wicket sponsor, Mr. Uday and Krishna Jain from Jensen LED Lights and Gandha Royal Refinery. Ashok Edwal will continue, switch in ends for him. In spite of some decent bowling by Ashok Kedwal, the run rate for Team Challengers is not bad. And the most important thing is that they have nothing to show in the wickets column. That should give them a sense of relief, a sense of well-being. This kind of a performance from Ashok Kedwal, maybe that will warrant more usage of Ashok Kedwal as a new ball bowler. Naturally gifted player, Ashok Kedwal. The fact that he's been given the new ball in this kind of a tense match situation, that is a testimony to the fact that the think tank has so much of faith in him. $35 for none. Looking to lay a solid foundation. Bhargav Vyas has been positioned in that point area. The oldest player in the tournament, that's Bhargav Vyas, doesn't look one bit his age. It's great to see his enthusiasm. After that good knock in the earlier match, I'm sure that Jonty Parekh will be more greedy for runs.
That is exactly what you want to be doing as an opener. That hunger for runs cannot die. After that good knock, he just needs to continue with the same mindset more than anything else. Yogesh Kotak will also be looking to play one very good knock before the qualifier number 1. You want to get into the groove before the qualifier number 1, you got to spend some quality time at the wicket. Some good match time is what the key players want at this point in time in the tournament. People are turning round the corner. The kind of eminent galaxy of superstars that team challengers have in their camp, anybody will envy them. Anybody will be jealous of what ammunition they've got in their armory. Rajesh Sonigara getting that semi-new ball for the first time is bowling first change. All the matches, Rajesh and Vipul have shed the new ball. Very well played, minimum effort and such a good result. A good looking rhythm mobiles boundary that had a lot of rhythm in it. A good cricketing shot. Team Tigers have to be very careful here. They got to effect those right moves. It is definitely a case for horses for courses. The right men have to be posted in the right areas. In the modern day cricket, fielders love to be stationed in their favorite positions, in their specialist positions.
straight down the throat of the man in the deep. The first Jensen LED Lights Gandha Royal Refinery wicket. On his way back to the pavilion is Yogesh Kotak after having scored 27 good runs of 21 balls. He's on his way back to the pavilion. A fine catch by Dr. Deepak More. Nice to see Hetul Kothari. A bit of good footwork there. And very good running by Rajesh Gadgil as well. Rajesh Gadgil is a very fit man. He's got the capability to be one of the finest batters at the GSC 45 plus cricket. He's not yet been able to take this edition by storm, but he's got immense potential. End of the PCPL power play period, 46 for 1 it is. They've lost just to 1 wicket. Yogesh Kotak. Playing with soft hands. That big knock from Rajesh Gadgil is overdue. He's been playing well. He's been fielding brilliantly. He's one of the key players in this camp. There is no doubt about it. But one good knock, say, playing 30 balls, 36 balls, 45, 50 runs, that will serve the team so well. Rajesh Gadgil picking at the right form, at the right time, as they move into the business end. That's going to be the biggest blessing for team challenges. It's got to come good tonight.
Ashok Khedwal. See, the best part in that shot was that he gave it his all, no half measures, and that is why the flying edge went crashing into the Rhythm Mobile's boundary fence. No room for error. Ashok Khedwal knows it. The slightest room to free the arms, and he went after it. And what he accumulated on the way was a very crisp Rhythm Mobile's boundary. Rajesh Gadgil up and away with that boundary. The scoreline reads 51. 50 runs up on the board for Team Challengers in reasonable time. Welcome to our senior co-convener, Subbu Bhai. The two co-conveners to the convener, Prasad Karkera, that's Subramaniam Venkat and Amarkan Jain. The key organizing committee members, Captain Abhay Vaidya, Vinay Surana, Monish Shah, Paresh Muchala, Manish Sharma, Amol Polke, Raman Khatri, Shailesh Chadwa. अव्वल दर्जे की फील्डिंग की बैसाखी उपलब्ध करानी होगी गेंदबाजों को. ये आखिरी मैच है और इस आखिरी मैच में टीम टाइगर्स ने दम नहीं तोड़ा, अपना सर्वोत्तम क्रिकेट खेला तो शायद वो गोल्ड कप का सेमीफाइनल खेल पाएंगे. सफर मार्ग प्रशस्त रहेगा टीम टाइगर्स अगर इस मैच को जीतती है तो. और इस मैच को जीतना आसान नहीं होगा क्योंकि टीम चैलेंजर्स 60% सफलता के रेशियो के साथ इस मैच में उतरी है और जबकि 50 रन के उस पार टीम चैलेंजर्स जा चुकी है. केवल एक ही विकेट खोया है. अच्छी शुरुआत हासिल हो चुकी है. वापसी के दरवाजे को बड़े पैमाने पे खोलना होगा टीम टाइगर्स ने. नजाकत से खेला. कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, बस केवल एक कंकर तबियत से उछालने की. तगड़ा क्रिकेट खेलना होगा टीम टाइगर्स ने. जोश के साथ, जज्बे के साथ, सूझबूझ के साथ अपने क्रिकेट को मार्ग प्रशस्त करना होगा. आखिरी मौका है. दम तोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं. टीम टाइगर्स अच्छी टीम है लेकिन एफर्ट भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टीम चैलेंजर्स को मात देनी है, शिकस्त देनी है टीम चैलेंजर्स को. आजमाइश होती हुई डॉक्टर मोरे की. is starting to now flourish. He's at peace with himself and is now starting to play his natural game at the GSC. He's making his debut this season. A couple of tentative starts, a little circumspect, collie wobbles in the stomach as he got started, but now he's settled. He's starting to show his talent. He's starting to exhibit his potential. He's a good team and a good asset for Team Tigers. There is no doubt about it with his all-round skills. Up and away, Doctor in the spell. Too short, too short. Rajesh Gadgil could have dealt with that rank bad ball a bit better. On any other day, that would have gone out of the ground. That was begging to be hit away. That's a loosener from Doc.
Oh, the ball kept a little low. Amit Parekh has spent enough time at the wicket to gauge the bounce and get his bat down in the nick of time. I like the approach and the body language of Amit Parekh. He's making the best use of the opportunity that has come his way. The head was a little off balance, and that is why that mistiming in the shot. The balance wasn't there. Now, quite an important responsibility that Doc has to essay tonight. Bhupendra Kadi now comes in. We all affectionately call him Kadi Kaka. Oh, that's well struck. Good timing on that one. You got to be stopping those. Rhythm Mobile's boundary. The anticipation has to be there. Just the way you come into a good position when you're batting, you got to be in the right position when you are fielding in the outfield, or for that matter, when you're fielding in those key areas inside the circle. The anticipation has to be spot on. That should have been stopped. No two ways about it. The Rhythm Mobile's boundary earlier in that over takes the score to 68, and now with that single, the score now on to 69. The current run rate 8.28, not bad. Hemant Mohite mentioned that 180-185 is what they are looking at. We have one more organizing committee member, Shailesh Chadwa, is coming with his junior. This is not going to be helping the cause of Team Tigers. Sorry to say that. That is bad cricket.
And Kadikaka is giving so much of flight. He's bowling those rank bad balls, which is exactly what you do not want. Team Tigers is going through a very delicate period of time wherein they have to be at the top of the game. One more with the mobiles boundary in this over takes the score to 73. That second run takes the score to 74. 75 now. Always getting some turn. Yesterday also Doc was getting some extra turn. So he's got that art of imparting those required revolutions to the ball for the ball to grip the surface and get that extra turn. 77 for 1. We are into the last over before the drinks interval. $78. Just look at the two batters who are waiting in the wings. That's Srinath Pai and Saket Adhikari. .2 overs, 79 for 1. Very well bowled. The perfect pitching, and just look at the turn. Gadgil was kind of
surprised with that extra turn. Is starting to give a good account of himself at the GSC Senior Cricket. That's Doc, who's making his debut. He'll have to get that extra consistency into his bowling. Every over is bowling a couple of brilliant deliveries. But those 2-3 deliveries have to be converted into 4-5 good deliveries so that he can be more meaningful. Srinath Pai has come in as the runner for Amit Parekh, and that is going to help him as his body gets warm. The adrenaline starts to flow in richly. The score at the end of 10 PCPL overs, that is 81 for 1. Exactly the kind of start they wanted. It's time for Team Tigers to regroup, realign. 47 minutes is what they've taken. Time for a promotional break. Over to Promo Productions. Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome back. Bhupendra Kaddi will have to make sure that he lands the ball. That's the first thing that he's got to make sure. The warmest greetings to our Cricket Committee Chairman and Governing Council member, Mr. Kaushik Mehta. Welcome to Vijay Singh. Well bowled. That's well bowled. The projected score, if they continue like this, it's going to be 161. The question is whether they will settle for 161. No ways. They'll be looking at 185, 190. On the other hand, team Tigers will be looking to not chase more than 150. And for that not to happen, they have to be on the spot. That's well struck. Well struck. Piercing the field in the deep. Amit Parekh, a scorching rhythm mobiles boundary from his blade. He's on to 31 of 24 balls. Doing the job for the team. Anytime both these batters could cut loose now with the likes of Srinath Pai and Saket Adhikari still in the wings. They'll be looking to build on the momentum now. That's Hemal Dave. The 11th PCPL over, 2 balls left. 90 for 1. End of the 11th over. 91 for 1. Welcome to our Governing Council member and the head of the IT department, Mr. Jitendra Gupta. Welcome to the coach, Umesh God. Switching ends for Doc. Slashing square cut, well timed and equally well fielded as well. That's DC, well done. It was traveling with great pace.
At the moment, Team Panther Kings have 4 points and also Team Tigers 4 points. So if Team Tigers lose this match, the net run rate will decide which team goes ahead. Mind you, it's all about having a look at the app. Once again, would like to reiterate that if Team Tigers win this match, they make it to the semis, no doubt about it. If they lose this match, the net run rate will decide which team goes ahead, which team plays the semi-final of the Gold Cup. So you got to make your own calculations. We are not saying anything. Ashok Kedwal bowled his spell, but now he's in a bit of a bother, and I just wonder whether the physio can make him fit so that he can bat those 36 balls. The captain gets himself into the bowling attack. He's going to be bowling from the in-orbit end. The man on strike is Rajesh. He's on to a very well-crafted 31 of 24 balls. He's on a song. He's playing well. Hundred runs up on the board for Team Challengers. It's taken them 12 overs and 1 ball. 73 balls is what they've taken to put those 100 runs on the board. Current run rate 8.22. It's been referred into the box. The third umpire, Tarun Patel, in action.
The batsman always knew what was coming up. Jensen LED lights, Gandha Royal Refinery wicket on his way back to the pavilion, but he's done the job for the team. A tidy job, a decent performance. That is exactly what was expected of him, that kind of a workaholic innings. Rajesh Gadgil being joined by Srinath Pai, that astounding batsman in this tournament, one of the best that we have at the GSC 45 plus. Srinath Pai, an absolute natural. The self-belief, the self-confidence, the match temperament, it ticks most of the boxes. But that's a very prized wicket. Himal Dave gets that wicket of Amit Parekh. 101 for 2. That's a cracker of a shot. Rhythm Mobile's boundary. Oh, it's going to be a Rhythm Mobile's boundary. They are starting to put a foot on the pedal. Rajesh Gadgil, one more Rhythm Mobile's boundary. What an expensive over. Score after 13 PCPL overs, 110 for 2. Rajesh is on to 40 of 27. Exactly what we were talking about, that the big knock from Rajesh Gadgil is due. And it's been such a good knock from Rajesh Gadgil. Come at the hour, come at the man. Choosing the right time. Just the way his timing is so good. He's picking in at the right time. Doc will continue. The stage is ideally set for Srinath Pai to come out and play his natural game. Till the time Rajesh Gadgil is at the wicket, I have a feeling that Srinath Pai will not to manufacture the shots that really aren't there. But if he gets 2 loose deliveries on the trot, he's going to be putting away both the deliveries out of the park or into that Rhythm Mobile's boundary fence. He will play those shots. For once he misses it.
Oh, that is such a good shot. Even somebody as good and quick as Rajesh Sonigara cannot get around it. What a platform this man is making use of. Rhythm Mobile's boundary. Quite an authority shot. 115 now. Picking up the momentum. Dirty balls is what Rajesh Gadgil has faced. Every time a batsman comes in that region, 29 30 balls, we will raise a red flag with an announcement. Oh, that's a loose delivery. That had a boundary written all over it. Doc knows that that's a mistake on his part, and Rhythm Mobile's boundary. Welcome one to Team Challengers. They're starting to look dangerous now. They're breaking the shackles. अभी तक जो भी देखा था वो फुल जेडी थी. अब आतिशबाजी देखने को मिलती हुई टीम चैलेंजर्स के खेमे में से. दो बड़े प्लेयर्स, दो बड़े नाम इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अच्छी साझेदारी पनपती हुई. और आज की शाम जिस तरह से अपनी इनिंग्स को सजाया है राजेश गाडगिल ने, वो बड़े पैमाने पे और ज्यादा आत्मविश्वास दे जाएगा टीम चैलेंजर्स को. बहुत ही खतरनाक रवैया इख्तियार किए हुए राजेश गाडगिल और श्रीनाथ पै. हम सभी जानते हैं कि ये बंदा क्या कर सकता है. अच्छी रनिंग. दोनों ही फिट बल्लेबाज है. देखिए फिटनेस की तरफ अगर रुख करे तो टीम चैलेंजर्स के खेमे में फिटनेस को लेकर मेरे ख्याल से कोई चिंता का विषय नहीं है. श्रीनाथ पै को देख लीजिए, राजेश गाडगिल को देख लीजिए, साकेत अधिकारी, हेमंत मोहिते, योगेश कोटक. किसी भी तरह से फिटनेस को लेकर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न नहीं होगा. जो विशेष रूप में जो की प्लेयर्स है करिश्मा कर दिखाया है आज की शाम. राजेश गाडगिल ने अपना कारनामा दर्ज किया है. इस तरह की इनिंग्स की दरकार थी. जरूरी था कि राजेश गाडगिल भी अच्छे फॉर्म में हो और ये हुआ है. ये बहुत बड़ी बात है.
क्या है उत्तप्पा? "32 balls is what Rajesh Gadgil has faced. Flighted delivery, mistime shot. ओ अपॉर्चुनिटी बनी थी। श्रीनाथ पै की हम बात कर रहे थे, बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। बाल बाल बचे। यूं तो फ्लाइट में चारों खाने चीत किया था हिमल दवे ने, उस अवसर को जन्म दिया था। स्वयं ही कैच नहीं लपक पाए, वरना श्रीनाथ पै को वापस आना पड़ता पेविलियन में। बड़ा झटका हो सकता था वो टीम चैलेंजर्स के लिए। In any case, he survives to fight another day. कड़ी काका के लिए मुश्किल होगा। दौड़ लगाई, लेकिन थोड़ा सा जल्दी ही अपने चेस को वहां पर ही रोक दिया था, दम तोड़ दिया था कड़ी काका ने। रिदम मोबाइल्स चौका, स्वागतार्य चौका मिलता हुआ। दिस इज लाइक एडिंग सॉल्ट टू इंजर। इसके पहले की गेंद पर कैच छूटा, 2 रन मिले। दूसरी गेंद पर रिदम मोबाइल्स बाउंड्री 22 के रूप में स्वागतार्य रन टीम चैलेंजर्स के लिए। 70 minutes is what they have taken to bowl those 15 overs. Not bad. 13 रन आए, 8 लेग बाइज उस ओवर में। अनुशासन को दर्शाना होगा, अनुशासन को लेकर आना होगा अपनी गेंदबाजी में और फील्डिंग में टीम टाइगर्स ने, वरना मामला पेचीदा हो सकता है। लेग बाइज के रूप में वो यस तरुण कपूर, नॉट टू वरी। Rajesh Sonigra knows that this is the big night. It's a challenging situation, but still you got to back yourself. This is the last opportunity, वरना ये सीजन आपकी यहीं पर समाप्त हो सकती है। लेकिन आपको पूरी तरह से फिर सहारा लेना होगा नेट रन रेट का। टीम टाइगर्स अगर इस मैच को हारती है, जीतती है, तो फिर कोई सवाल ही नहीं, गोल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश होता है। अगर टीम टाइगर्स इस मैच को हारती है तो नेट रन रेट देखना होगा फिर पैंथर किंग्स और टाइगर्स का। हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको केवल ऐप के हिसाब से जानना है, आपके कैलकुलेशंस आपको स्वयं करने हैं। Where's the bowler? Raju sir, do you want to bowl?
Yes, sir. We are into the 40th match, and I'm sure that the GC member and the cricket committee chairman, Mr. Kaushik Mehta, and his organizing committee, that is the convener Prasad Karkera, the co-conveners Sububai and Amarkan Jain, and the whole team will be more than happy with what has come out of the season so far. Still some time left. The organizing committee is not going to be relaxing at all. They have gone to the drawing board to execute that mammoth box cricket ka Mahakumbh, which is happening from the 1st of May till the 4th of May. So no time to relax for the organizers. Vipul Kalyani it is to come back for his final throttle. Start of the 16th PCPL over. They have gone back to their frontline bowler. That's Vipul Kalyani. "34 balls for Gadgil. 2 balls left. He's on to 48. What a knock. And just look at the timing. That knock has come in at the right time. Is too good a player to be left out of the scheme of things for a long time. It was on the cards. The perfect channel delivery. Perfect one. In the right corridor. Getting just about enough turn to beat the probing bat of Pai. That's a rare sight. Oh, what a shot. Just look at the power that he generated. Comfort Group 6. Wasn't such a bad delivery. The raw, brutal power of Srinath Pai. Strong forearms. Very strong forearms. What a terrific shot. Terrific shot. 143 for 2 it is. We are into the 16th over. 2 balls left. Clean bowled him. Clean bowled him. That is well bowled. That was the arm ball. To be playing Vipul Kalyani with that kind of a cross bat rooted into the crease, that is inviting for trouble. Jensen LED lights, Gandha Royal Refinery wicket. That introduction of Vipul Kalyani into the scheme of things, that proves to be the master stroke. In comes Mr. Flamboyance, Saked Adhikari. But they will be more than happy to see the back of this dangerous man, that's Srinath Pai. They have collected him. They've got him in the kitty. A big sigh of relief. The debonair, Vijay Singh. एक ही है
That is the half century for the big man. He's such a relieved man. He's just raised his bat lightly, but he knows that he's done the job for the team. Rock solid performance tonight by the big man, Rajesh Gadgil. The monkey's off his back. He knows that he's made a big contribution. He's got the final ball to come in his quota of 36 balls. He'll have a good sleep tonight. Yes, as one of the key players, you always want to make a contribution towards the welfare of the team. Players like Saket Adhikari, Srinath Pai, Yogesh Kotak, they were all the big contributors. Although he had a few good starts, he wasn't able to convert those good starts. But tonight, that's a 24-carat gold knock, the last ball. How does he intend to wind up his innings? Oh my God! केवल यही देखना बाकी था. दो रनों के साथ अपनी 36 गेंदों में 54 रन्स बना के पेविलियन वापस आएंगे राजेश गाडगिल, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वापसी होगी. क्या नॉक खेला है, किस तरह से इनिंग्स को शुरुआत में संवारा, फिर सजाया, सही दिशा दी टीम की इनिंग्स को. जेनसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट. द इंजर्ड वॉरियर अशोक खेडवाल इज गॉट टू बी फिट. इतना तो फिट रहना होगा कि वो 30 गेंद तो कम से कम खेले. फिटनेस को लेकर इश्यू है, वरना तो कोई अशोक खेडवाल की क्रिकेटिंग करियर में कोई और प्रॉब्लम नहीं है. और एक हमारे कोच प्रेम का आगमन हुआ है. उमेश गौड़, प्रेम, प्रियांक, ये 3 रेगुलर फेसिस है. तरुण कपूर भी कोचिंग करते हैं. जॉन्टी सिंह भी कोचिंग करता है. स्वागत है मनु गौतम का, सुशील गौतम का. भाई कुछ मत कर रहा हूं उधर. राजेश सोनेग्रा की 2 गेंद बाकी है दूसरे ओवर में. सही मायनों में हर लिहाज से 100% बिल्कुल एक प्रोफेशनल प्लेयर के नाते पेश आते हैं साकेत अधिकारी. वो उंगली उठी है, लग ही रहा था कि थोड़े से खतरे में है. चलते चलते शॉट को खेलना चाहा हेमंत मोहिते ने. देख लीजिए, नहीं चलते चलते नहीं, लेकिन अपनी क्रीज में ही वॉज रूटेड टू हिज क्रीज. थोड़ा सा पहले मन बनाया था कि मैं केवल बल्ले को अड़ाऊंगा और 1 रन ले लूंगा, थोड़ा सा प्री मेडिटेटेड. Hemant Mohite has missed out on that opportunity. Jensen LED lights, Ganda Royal Refinery wicket.
half the team is back in the pavilion. Very rarely we have seen half the team back in the pavilion for team challenges. Very rarely. दम नहीं तोड़ेगी टीम टाइगर्स. वो 165, 170, 175 तक अपने आप को बैक करेगी. 180 के ऊपर ये टीम जाएगी तो मामला थोड़ा सा पेचीदा होगा. 170, 175 अपने आप को बैक करेगी टीम टाइगर्स. और थोड़ा सा पता था विपुल को कि शायद आगे स्टेप आउट होंगे. उस बात को मद्देनजर रखते हुए उस गेंद को थोड़ा सा दूर रखा था साकेत की रेंज से ज्यादा ही बाहर. वाइड का इशारा. 154 रन बने हैं. इस बीच स्वागत है करण सिंह वालिया का. बहुत ही शानदार फॉर्म में रहे टीम गैंगस्टर्स के को ओनर. बहुत ही बड़ा मौका टपका दिया. बहुत ही बड़ा मौका. वरना साकेत अधिकारी को तो पेविलियन आना बनता था. और इस मर्तबा सबसे ज्यादा खुश होंगे तरुण कपूर क्योंकि वो जो स्टंपिंग चांस मिस किया किसी भी तरह से कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा. विपुल कल्याणी का यह शानदार स्पेल. विकेट से दामन छूटा है साकेत अधिकारी का और अब आगमन होता हुआ योगेश शर्मा का. योगेश शर्मा को आज बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा. अगर ये हम मैच के पहले कहते तो वो कहता कि सवाल ही नहीं मेरी बल्लेबाजी आने का. लेकिन टीम टाइगर्स ने लगातार ड्रिंक्स इंटरवल के पश्चात तो विकेटों को कलेक्ट किया है. हेमंत मोहिते, श्रीनाथ पै, साकेत अधिकारी जैसे बल्लेबाज चंद डिलीवरीज में पेविलियन में वापस आ चुके हैं. वन 142 पे दोस्तों केवल 2 विकेट्स थे. 154 रन बने हैं यानी कि 12 रनों में 4 बल्लेबाजों को खोया है टीम चैलेंजर्स जैसी बड़ी टीम ने. विद इन अ स्पेस ऑफ 12 रन्स दे हैव सेंट बैक 4 top order batters into the pavilion. So a good rear guard action by Tigers. That's a very good counter by Tigers. मधुसूदन अय्यर. योगेश शर्मा ने अपनी गेंदबाजी के साथ सभी को मंत्रमुग्ध किया है. मेरे ख्याल में पर्पल कैप होल्डर है. आप बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा अच्छा साथ निभाना होगा. थोड़े से रन्स बटोरने होंगे. सिद्धार्थ गुहा और योगेश शर्मा इस वक्त बल्लेबाजी की जिम्मेवारी स्वीकार किए हुए. ये उंगली उठी है. खराब क्रिकेट. योगेश शर्मा आगे निकल गए थे पहले ही और वापस नहीं आ पाए. घर वापसी नहीं हुई योगेश शर्मा की. फलस्वरूप जेंसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट. विकेट्स आर फॉलिंग लाइक 9 पिंस. इन कम्स परमिंदर भामरा. चलिए मोमेंटम गैदर किया है टीम टाइगर्स ने. मैंने पहले कहा कि वो 170 के अंदर अगर इस इनिंग्स को समेट लेते तो फिर अपने आप को बैक करेंगे. एक मौका बनेगा. यू कैन नॉट count this team out of the scheme of things if they have to chase anything less than 170. Something in the region of 165 capable of chasing it. Oh,
बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट आर्म गेंद। गत 12 गेंदों में 5 विकेट्स मिले हैं टीम टाइगर्स को। विपुल कल्याणी डेफिनेटली द आर्किटेक्ट ऑफ दैट काउंटर बीइंग गिवन टू टीम चैलेंजर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम ये लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को विकेट पे आने का मौका मिला है। के नीचे रही। मैच में वापसी होती हुई, अच्छे पीरियड से गुजरती हुई टीम टाइगर्स। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हुआ अब उन्हें पता है कि एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। वापसी का माहौल नजर आता हुआ। इस बीच मजिशियन अनिल दुग्गर का आगमन होता हुआ। कुल मिला के 9 गेंद आनी बाकी है। 9 गेंद। बड़ा शॉट, इसी शॉट की दरकार थी। कंफर्ट ग्रुप 6 वो गेंद को आगे की तरफ परोसा और खामियाजा भुगतना पड़ा राजेश सोनीग्रा को एक कंफर्ट ग्रुप छक्के के साथ। उससे छक्के के साथ एक राहत की सांस लेगी टीम चैलेंजर्स। ये छक्का काफी काम आएगा। 163 रन बने जबकि कुल मिला के 8 गेंद बाकी है। क्या बात है, निखिल कोहली का स्वागत है। विराट कोहली के दर्शन होते हैं लेकिन निखिल कोहली के दर्शन दुर्लभ हुए हैं। पंपिंग इन दी आयरन, लोहे के साथ खेलते हुए। कोर स्ट्रेंथ बनाना है तो लोहा उठाना ही होगा, वरना वो कोर स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। लोहे के बिना काम नहीं बन पाएगा बॉडी बिल्डर बनना है तो। ओ लूज गेंद थी, मिस कर गए। परफेक्ट स्लॉट में वो गेंद थी, मिस कर गए। 19 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 165 रन बने हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 174। अब ये आखिरी ओवर में देखना है कि हिमल किसकी आजमाइश करते हैं। शायद स्वयं ही आएंगे, बिल्कुल 100% स्वयं ही आएंगे। चलिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दो ही विकल्प थे, या तो स्वयं आए या तो फिर भूपेंद्र कड़ी को वो गेंद थमाए।
Madhusudan Iyer. $173 तीन गेंद आनी शेष है. हेमंत मोहिते ने 180 की गुहार लगाई थी टॉस इंटरव्यू के वक्त. 180 185 की तरुण कपूर को बड़ी रिस्ट इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है, इस वजह से बल्लेबाजी करने के लिए आगे उतरे नहीं है और अभी तक पूरी तरह से वो जख्म भरा नहीं है, उसके बावजूद खेल रहे हैं. क्विक वन, बहुत ही ज्यादा आगे थे, उस लिहाज से वो अपील वहां पर ही थमा दी. लेग बाइस के रूप में 1 रन की प्राप्ति होती हुई आखिरी गेंद. 175 रन बन चुके हैं. रिदम मोबाइल्स चौका. 180 रन बनाने हैं जिस गुहार को लगाया था हेमंत मोहिते ने. टीम खरी उतरती हुई 180 रन बनाने होंगे इस मैच को जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए. नेट रन रेट को लेकर भी खबरदारी का इख्तियार करना होगा. इट्स ऑल अप टू टीम टाइगर्स टू रिमूव दैट कैलकुलेटर को बाहर आना होगा. वो कैलकुलेशन से करेंगे हितुल कोठारी मेरे ख्याल में. चलिए मिलते हैं मिड इनिंग्स ब्रेक के बाद. 182 विन. थैंक यू. Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing.
tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome back post the mid-innings break. For the first time in this tournament, Tarun Kapoor comes out to open the batting for Team Tigers. As was expected, Aslam Bhai has not made it, and it's been decided that he will not be coming now. So Tarun Kapoor comes in as the opening batsman, and to give him company, that is Dr. Deepak Morwe, the non-striking end. And as always, it's going to be Pramod Kashyap, the smooth operator, to start with the new ball from the infinity end. Play time. This is exactly where he needs to bowl. This is exactly the channel wherein he wants to be putting up the new ball consistently. Welcome to our key organizing committee member, that's Raman Khatri. Welcome to Sunil Devli. स्वागत है करण सिंह वालिया का, पराग शाह, राजेश पटनी, जीतू मंडोट. Welcome to Kuvar Mahajan. Everything happening out there. Tarun Kapoor. तरुण कपूर 2 रन ले लिए, लेकिन हम एक ही रन दर्ज करेंगे. चलिए, प्रमोद कश्यप के लिए ये चुनौती है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड को कितनी सटीक तरीके से अपनी लाइन एंड लेंथ को एडजस्ट करते हैं. अभी तक इस टूर्नामेंट में काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की है. नई गेंद के साथ वाकई में एक बहुत अच्छे सीम बॉलर के रूप में उभर कर आए हैं. डॉग को फिर से एक बार आज एक बढ़िया नॉक खेलना होगा. जब हम बढ़िया नॉक कहते हैं तो वो 45-50 रन का होना जरूरी है. 30-35 नहीं, 45-50. जिस तरह से कल किशाम प्रसाद करकेरा ने उस शानदार अर्धशतक को दर्ज किया था, मैच को जिताया था, वो जो 3 बार जो रनआउट हुए प्रसाद करकेरा, वो हर्ट हुआ है. बहुत ही अच्छा नॉक खेला कल, एंटरप्राइजिंग नॉक. It's a cardinal sin to be getting run out. It's a sin. पहली ओवर की समाप्ति के बाद केवल 3 रन से दिए प्रमोद कश्यप ने. अच्छी शुरुआत. प्रमोद कश्यप अपनी गेंदबाजी में बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं. उनका पेस ठीक ठाक है, और अच्छी बात यह है कि अपनी सीमितताओं को जानते हैं, अपनी गेम के दायरे को जानते हैं, अपने हुनर के दायरे को जानते हैं, और उसी तरह से अपनी गेम को उसी ढंग में, उसी रंग में सजाते हैं. पवन अग्रवाला,
मौका बना है और आसान सा कैच। तरुण कपूर के लिए सॉफ्ट डिसमिसल। जेंसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट। पहला धक्का। हाफ मैचेस नहीं एम्प्लॉय कर सकते हो आप। इस मैच पर नजरें बनाई हुई है प्रसाद करकेरा ने। पूरी पैंथर किंग्स इस मैच को फॉलो करेगी क्योंकि उनका आगे का सफर इस मैच के नतीजे पर निर्भर होता है। क्रीज से दामन छूटा तरुण कपूर का और क्रीज पर अब आगमन होता हुआ अशोक खेडवाल का। थैंक यू। थोड़ा सा जल्दी खेल लिया अपने शॉट को। पवन अग्रवाला के इस महत्वपूर्ण स्पेल के पहली गेंद पर सफलता उनके हाथ लगती हुई। क्या खूब फॉर्म रहा है टीम चैलेंजर्स का, देखने लायक, सभी का मन लुभाने वाला परफॉर्मेंस लगातार पेश किया है टीम चैलेंजर्स ने और उसी वजह से बिल्कुल एक चैंपियन टीम के नाते ख्याति प्राप्त होती हुई। आखिरी लीग मैच में अगर वो 80% सफलता का रेशियो इक्वेशन बनाने में सफल होती है टीम चैलेंजर्स को तो एक बहुत ही बड़ी बात है। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इतिहास में 45 प्लस के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि एक टीम ने 100% विनिंग मोमेंटम बरकरार रखा है। मेरे ख्याल में हुआ एक आध बार। सवाल इन्हें जो एंगल आपको मिलता है राइट आर्म राउंड द विकेट और इस बात की भी खबरदारी लेनी होगी कि आप मेन अंपायर के व्यू को ब्लॉक न करें। एक चीज वो, दूसरी चीज कि आप डेंजर एरिया में रन न करें अगर आपके पास वो स्पाइक्स या हाफ स्पाइक्स है तो। और अगर केवल रबर स्पाइक्स है तो यू आर नॉट वेयरिंग द राइट काइंड ऑफ फुटवेयर। पवन अग्रवाला ने भी काफी कंसिस्टेंटली नई गेंद का सटीक उपयोग किया है और अपनी टीम के लिए एक एसेट के रूप में उभर कर आए हैं। नई गेंद के साथ काफी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं प्रमोद कश्यप और पवन अग्रवाला। अंदरूनी किनारा,
फिर से एक बार द लेमन कट परमिंदर बामरा की दिशा में वो गेंद बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग। जब कभी मौका मिलेगा परमिंदर बामरा ने आज एक अच्छे स्पेल को अंजाम देना होगा, क्योंकि अब आगे बिजनेस एंड की शुरुआत होगी। उसे लिहाज से अच्छे फॉर्म में होना, अच्छे रिदम में होना, अच्छे ग्रूव में होना ये जरूरी है। विशेष रूप में जो टीम के की प्लेयर्स है, द की प्लेयर्स हैव टू अप द एंटी एट द राइट टाइम। दीपक मोरे का फॉर्म देख लेते हैं। पहले 7, फिर 6, फिर 12 नॉट आउट, फिर 50, फिर 28। तो पहले 2 साधारण इनिंग्स के बाद मोमेंटम बिल्ड किया, एक नॉट आउट, फिर हाफ सेंचुरी, फिर से एक बार अच्छा नॉक। आज की शाम क्या करते हैं वो देखना होगा। अच्छे प्लेयर तो उभर कर आए, अब इसमें तो किसी के मन में शंका होने का कोई सवाल ही नहीं है। विद मोबाइल्स बाउंड्री, अशोक खेडवाल के बल्ले से वो चौका। प्रमोद कश्यप के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा है, तो हल्का सा एक्स्ट्रा प्रेशर उभर कर आएगा। चौके या छक्के की बाद की जो फॉलोअप गेंद होती है वो बयां करता है कि गेंदबाज में कितना दम है, कितनी तैयारी की है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्लेयर्स के लिए देखिए, वो शॉर्ट थर्ड मैन वाला फील्डर, पॉइंट वाला फील्डर और एक्स्ट्रा कवर का फील्डर, तीनों ही पोजीशंस बदलते हुए। तीसरा पीसीपीएल ओवर। And not in a position to play that kind of a shot, too close to his body to be playing that cut shot. Should have been on the front foot. The only shot that was possible was the on the rise shot to that extra cover or mid off area. This is exactly what was warranted to the earlier delivery as well. Yes, lots and lots depends on how Doc now takes his innings forward. End of 3 PCPL overs, 13 for 1. The required run rate has gone up to 9.82.
Wonder where P. Ramchandran is tonight. Oh, that is a good shot. Well timed. Exquisite timing on that. All grace and poise, Doc. Lots of rhythm in that rhythm mobiles boundary. Yes, we are missing Mr. P. Ramchandran, and if you are following us, I have had your cup of tea, Mr. Ramchandran. Both the batters on 7. Deepak on to 7 of 8 and Ashok on to 7 of 5. The perfect ball. Well played as well. Kuvar Mahajan. Very rarely we are getting to see the young guns who played the Open League. Very hardly they turn up for this 45 plus event. Yeah, they might be busy with their professional commitments. What a good looking shot. Ashok Kedwal will never miss out on those half volleys. A rank bat ball that goes crashing into the Rhythm Mobiles boundary fence. Minimum effort and the desired result. He's got to play his natural game, but he also has to be a little careful about the shot selection. He does not want to perish early. A required run rate 9.71. We are into the power play period. The fourth PCPL over being bowled by Pawan Agarwala. The man on strike is More. Score after 4 PCPL overs, 24 for 1. They are just wondering whether to give the ball to Pramod Kashyap. Looks like they've decided to go with him. Or maybe just Hemant is inquiring with Pawan, are you game for bowling the third over or you want a break? And I feel that Pawan might say that give me one more go. Pramod Kashyap has picked up only 2 wickets in 5 matches, but it's been decent.
Almost nailing the Yorker. That's the lemon cut. Hemant Mohite is looking at peace with himself. He's relaxed. He's got a good team and he just has to guide the team. He's just got to be logical. He's just got to be mature. He's just got to keep things cool and composed in the camp. Bit of an aggressive intent, which is the natural facet of the game of Ashok Kedwal. He plays with gay abandon. Yesterday it was good for everybody to witness Ashok Kedwal putting a price on his wicket, and courtesy which he scored those 29 runs, 29 valuable runs. So now he'll be looking to carry that same form into this knock as well. Thank you to our title sponsor, Lakshmi Leela Group. Oh, this was on the cards. We'll have to wait and watch. The bails are still on the stumps, is it, Hemant Mohite? There you go. That's going to be an interesting replay. अगर लगता तो अशोक खेडवाल की पार यहीं पर समाप्त होती. વિપુલ કલ્યાણીને કહે લાગ્યું જ નથી. યસ, Hemant Mohite missing out on that kind of a chance will happen only once in 2 years. Madhusudan Iyer is padded up. He might be sent in straight away if a wicket falls. It all depends on what the captain feels the match situation is. Yesterday he played a good cameo. Srinath Pai. For once, Srinath Pai and Sakit Adhikari missed. For once. That could just be a small blip for both of them as they get into the business. And the qualifier number 1, they'll be up against Team Warriors. That match is going to be between Hemant Mohite and Rajesh Patni. Qualifier number 1. Tomorrow, it's going to be the semi-final of the Gold Cup. Team number 5 will play team number 8, and 6 and 7 will play the other semis. The number 8 spot will have to be Team Tigers or Team Panther Kings, either of them. 90 में 151 चाहिए.
Thank you to all the viewers on YouTube. Thanks for your support and patronage. Tonight it's match number 40, the last round robin league format. From tomorrow, it's going to be the business end. पहली 4 टीम्स प्लैटिनम कप का क्वालिफायर नंबर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर नंबर 2 खेलेंगे और फिर ग्रैंड फिनाले. कल सेमीफाइनल होगा टीम नंबर 5 और टीम नंबर 8 के बीच. Oh, this could be a chance. No. No danger. Back home in the nick of time. Predominantly, Deepak More uses the bottom hand, especially when the deliveries are low full tosses. Jonty Parekh in that deep mid-wicket area. Current run rate has gone up. The required run rate has gone up to 10 plus. 86 balls and 147 runs. Playing with soft hands. Pawan and Pramod have provided that stability to the bowling attack of team challengers as a new ball bowling pair. They have been decent, more than decent at times. Setting up the game for bowlers like Yogesh Sharma. End of the power play period. 25 for 1. 84 balls, 145 required. The required run rate more than 10 and over, 10.86.
पीसीपीएल पावर प्ले के पश्चात गेंद थमाई है टीम के हुक्मी इक्के को। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी को लेकर बिल्कुल सज्ज होते हुए इन्फिनिटी एन की तरफ से योगेश शर्मा। पर्पल कैप इस वक्त योगेश शर्मा के सर पर इस वक्त है। सामना करते हुए खेड़वाल। मौका बनाया पहले ही ओवर में, सफलता हाथ लगती हुई और अब शायद वो पर्पल कैप उनके सर पर जाती हुई, वरना तो सैम कपाडिया थे। शायद इस विकेट के चलते वो पर्पल कैप उनके पास जाएगी। जेंसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट। अशोक खेड़वाल पेविलियन में वापस अपने पहले ही ओवर में अवसर बनाया, स्वयं कैच लेकर चलता किया अशोक खेड़वाल को। बड़ा विकेट है ये।
The finger goes up. That's a strong appeal, and he picks up one more wicket. Yogesh Sharma. That is the big fish in the net. Jensen LED Lights, Gandha Royal Refinery wicket. He's done enough damage in the very first over. In comes DC, the left-handed Dinesh Chaudhary. Just look at the spoiler, the purple cap holder. 2 wickets in the first 4 balls that is bowled tonight. What a terrific start to the spell, Yogesh Sharma. Yogesh with the ball and Yogesh Kotak with the bat. दोनों योगेश अपनी टीम के लिए एसेट्स है. मामला पेचीदा होता हुआ टाइगर्स के लिए. जो गेंदबाजी पेश की है टीम चैलेंजर्स ने टाइगर्स के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है. परेशानी की लकीर मत्थे पर नजर आती हुई बड़े पैमाने पे. बड़ी चुनौती, अग्नि परीक्षा. अब आजमाइश होती हुई परमिंदर की. सभी अपनी जो मुख्य विकल्प है सभी विकल्पों का आज यूसेज करेंगे, आजमाइश करेंगे ताकि पता हो कि कौन कितने फॉर्म में है. अच्छा तगड़ा शॉट. फ्लाइट में बीट किया. थोड़ी सी अपनी गेंद की लंबाई को खींचा था, छोटा सा रखा था अपनी लंबाई को. फ्लाइट थोड़ी सी उसी तरह की थी और वो शॉट प्रयास किया.
इस मर्तबा डीसी के बल्ले से निकलेगा रिदम मोबाइल से चौका। केवल अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय करना है। काफी समय के बाद आगे बल्लेबाजी करने का मौका मिला। 8वां मैच खेल रहे, केवल एक ही मैच में, इसके पहले के मैच में थोड़ा सा आगे आए थे। इस मौके को दोनों हाथों से अब ग्रैब करना होगा। हमारे जॉगिंग ट्रैक पर कुछ बच्चे उल्टे दौड़ रहे। उल्टे मत भागिएगा, क्लैश हो सकते हैं हमारे इवनिंग वॉकर्स के साथ। सो प्लीज डू नॉट रन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। वो दौड़ देखो कैसा है ना, आप किधर भी जाओ, जितने भी जॉगर है ना, वो ऐसे कर, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। हाँ, खुद एथलेटिक्स वाला है, तो ये ऐसा है। आप एक ऐसा मालूम है, अभी इन लोग का चालू हुआ है ना, वो हमारे इधर भी ग्राउंड में है ना, मैं गया था तो चेंज करने बोला, नहीं चेंज हुआ, फिर से वैसे ही। Yogesh will continue. Himal Dave. Early days for him. अपील में थोड़ा सा डाउट था, थोड़ी शंका नजर आ रही थी योगेश शर्मा के चेहरे पे। 44 पे 3, रिक्वायर्ड रन रेट 11.50, 12 के घर में। अच्छा इनसाइड आउट शॉट, बहुत ही सटीक प्लेसमेंट और एफर्ट कितना कम, नतीजा देख लीजिए, रिदम मोबाइल्स चौका। पचास रन बने हैं।
Score after 9 overs, that is 53 runs for the loss of 3 wickets. 66 गेंदों में 127 रन बनाने हैं. ड्रिंक्स इंटरवल के पहले का ये अब आखिरी ओवर. और एक विकेट का पतन होता हुआ परमिंदर बामरा के हाथ वो जेंसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट हाथ लगती हुई दिनेश चौधरी पेविलियन में वापस आते हुए चौथा विकेट का पतन हुआ है. मामला बिल्कुल पेचीदा. आपातकालीन स्थिति उभर कर आई है टीम टाइगर्स के लिए. आपातकालीन स्थिति. आशीष का आगमन होता हुआ.
That's the last delivery before the drinks and interval. 4 wickets down for 55. So yes, sir, that is the drinks and interval. 10 overs, 55 for 4. Required run rate 12.50. 54 minutes is what they've taken. Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome back. The 11th PCPL over underway. Yogesh bowling his third over. This time he comes from the in-orbit end. For once, Hemant Mohite misses it. Not able to go down in time. In that particular over, Yogesh goes wicketless. Required 113.33. Parminder into his third over. He's picked up a wicket and is given away only 10 runs. So doing a steady job for the team. They have a very formidable player in the form of Himal Dave to be negating. Oh my God, Saket Adhikari. Can you believe it? Unbelievable for Saket to be dropping that kind of a catch. He was in the position on the second attempt as well, but that was not to be.
Good stop. Good stop by Jonty Parekh. Is indeed fielding like Jonty. That's one shot. One run shot. On the line, you got to be inside the line. You got to have a part of your bat inside the line. That's well collected and good throw as well. Underarm throw, but it was a flat one. बारह ओवर्स के बाद 66 रन बने हैं और इन 66 रन बनाने की जद्दोजहद में 4 जेनसन एलईडी लाइट्स, गंदा और रिफाइनरी विकेट्स का पतन हुआ है. मामला बिल्कुल आपातकालीन है, लेकिन बतौर एक प्रोफेशनल टीम इस मैच को सही तरीके से खेलना होगा. साकेत अधिकारी की अब आजमाइश होगी. गत 3 मैचेस से हम लगातार साकेत को गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं. आज की शाम फिर से एक बार उस विकल्प को आजमाते हुए हेमंत देखने के बिजनेस एंड वाले मैच में क्वालिफायर नंबर 1 में क्या साकेत को गेंदबाजी मिलती है. चिंटू भाई आशर का स्वागत है. हेमल दवे अपना गेम खेलते हुए, उन्हें पता है कि दिल्ली बहुत ही दूर है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अपनी इनिंग्स को संवारते हुए हेमल दवे साकेत बॉलिंग क्रीज के बहुत ही कॉर्नर से एंगल करते हुए गेंदों को
Score after 13 PCPL overs, 71 for 4. Siddharth Guha it is to be bowling from the in-orbit end. Clean bowled. आदि टीम पेविलियन में जेंसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट और सभी को एंटरटेन करने के लिए अब मधुसूदन अय्यर का आगमन होता हुआ. Shrivals is having a meal which is going to keep him happy because he knows that they are almost making the cut. वो शंख भी आएगा कल. गुहा को वो जेंसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट की उपलब्धि होती हुई. नो गेंद, हाथ से छूटी, ऐसा तुरंत ही उन्होंने माफी मांगी. Himal Dave is going about things coolly. He's just putting the bowling on its merit. He's spending some time at the wicket. He knows that somebody's got to play a steady innings. Too much to do in too little time.
Rhythm mobile's boundary. It's a no ball. $74 is what they have consumed to bowl those 15 overs.
1 run added. Almost 18 runs required every over now. Siddharth has already picked up a wicket. Going through the motions here. Team Tigers have to win this one, which is looking very difficult at the moment to stay alive. If Team Challengers hand out a defeat to Team Tigers, Team Challengers will keep up their 100% winning momentum. Hemal Dave, after that gritty knock, is on his way back to the pavilion. Jensen LED Lights Gandha Royal Refinery wicket. Siddharth picks up his second wicket. And if Team Tigers lose the match, Team Panther Kings make it to the semi-finals of the Gold Cup, and the semi-final is going to be tomorrow. The team that is positioned at the number 5 spot after this match will play against the team that is stationed at the 8th match, the 8th position. छुट्टी Sonigra gets a chance to have a go.
Putting the ball over into that to wide-ish mid-on area. That's too wide. Yogesh is into his final over. We are into the 18th over. What a shot. Terrific shot. Lusty blow. Out of the park she goes. Sonigra enjoying his stay. Comfort Group 6. Well struck. That's a brutal blow there. Taking on Yogesh Sharma. He will not like to be treated like that.
Oh, Miss Josh, and it's going to be a Rhythm Mobiles boundary. It's providing that latest flourish. Oh, missing by a whisker. Even Hemant Moite misses it, and that's going to be a Rhythm Mobiles boundary, is it? It's made a good dash for it. That's a good effort. Good commitment. That's Siddharth Gua. Well done. Jensen LED lights, Gandha Royal Refinery wicket. Yogesh Sharma picking up one more wicket. Madhusudan Iyer picks up a Rhythm Mobiles boundary. Only formalities left. Required run rate is 39 and over. So statistically also they cannot get there. They're writing on the wall. Second boundary on the trot, and second day in the running is playing his strokes and is collecting some aggressive runs.
Nicely leaning into that shot. That's Deepak Shah now. The journey for Team Tigers in this season is about to come to an end. Team Challengers will surely, more than 100%, they maintain that winning momentum. 8 wins out of 8 matches. Yes, one unique record to the name of Team Challengers. One more Jensen LED lights and Gandhar Royal Refinery wicket as Madhusudan comes back. 4 to 5 years back, Team Challengers won all their matches and lost the grand finale. They would like to improve that record this season. So Team Challengers definitely the team to beat, and Team Warriors the defending champions. Yeah, that was in the main league. Yes.
Congratulations to Team Challengers as they win their last league match, 8 wins out of 8. They get into the qualifier number 1 with so much of gusto, so much of confidence. On the other hand, it's a big relief as Panther Kings make the cut. They're going to be playing the semi-final match. They're going to be playing against Riders. And the other semi-final match, Gangsters and Gladiators. The two semi-finals for the Gold Cup. For the Platinum Cup, it is Team Warriors and Team Challengers to be playing the first qualifier. The eliminator will be played between Team Blasters and Team Superstars. That's the scene out here. Time for everybody to get into the presentation area. It's going to be the Cricket Committee Chairman, Mr. Kaushik Mehta, and the convener of the event, Mr. Prasad Karkera, to be a part of the presentation party. Most a warm welcome to the post-match presentation as the round robin league format comes to an end. 40 matches are over and we have pretty much lined up the
semi-final position for the Gold Cup as well. It's going to be the number 5 team, that is Team Riders. You're going to be playing against the number 8 team, that is Team Panther Kings, and Gladiators and Gangsters will play the next semi-final match. The Platinum Cup, Team Warriors versus Team Superstars. The first qualifier, the eliminator, is going to be played between Team Superstars and Team Blasters. So that's the scene out here. It's a time for me to invite the captain of Team Tigers to please come up and have a word or two with us. Round of applause for Hemal Dave as he comes up on stage for one final time this season. Never mind, this happens. The main aim was to go out there and enjoy the cricket, which I think you'll have enjoyed the 8 matches that you guys played. And age is only a number. Quite a few positives you collected in spite of not such a good stint at the 45 plus T20 league. It was a good season, many things to learn, and my teammates are also here learning. So it was a good team efforts, but we lacked in some of the matches where we had to have a good bowling side. And today, in the last 2 matches, there were players short also, and our main Aslam Bhai was not there. All the best to Team Challengers for their non-stop victories. I hope they get the cup. Thank you, Hemal Dave, sporty as ever. And it's time for me to invite the winning team captain to please come up. That's a very confident Hemant Moite. He's made a habit of coming up on stage. And he will be looking to come up on stage for the next 2 matches. Hemant Moite, congratulations, well done. 8 wins out of 8 matches, that is terrific. It goes without saying, you do not have to prove anything to anybody. It's been a great tournament. The only thing is that you just got to keep up at this moment, and for the next 2 matches, do or die situation. You cannot afford to make a mistake. You guys are on an absolute high. So what's going on in your mind at the moment? First of all, I'll just congratulate the Tigers team. You bowled very well. In the initial stages, very disciplined. Our batters found it very difficult to score, and in the end, you also scored. You also controlled us below 200. Good bowling, and our batting leading by Rajesh, Amit, and YK. Guys, it was a difficult pitch to bat on. You did a good job, and we had a very respectable total. And sir, it is a dream run for our challengers team, backed by good owners and dream team, I would say. The auction day was nice, so we had a good day. So we were supported by Rahul Jha. He had a good experience of auction, so that was the the turning point of the tournament for us. And we would like to continue from here. I would like to tell our boys to don't be complacent, and we have to be mentally and physically in the tournament still. It's a long way to go, and we have to live the big one. Thank you, Hemant Moite. In this kind of a scenario, you just got to be careful of the law of average catching up to you, but it's been a dream run, and hopefully they will go the distance. They deserve to go the distance. It's a game of cricket, but you never know what happens in the qualifier number 1 and then the eliminator in the grand finale. It's time for us to hand over the purple cap. The purple cap to be handed over by the convener of the event. That's Prasad Karkera, Yogesh Sharma. That had gone away off his head for a couple of days, but once again, the purple cap back on his head. 15 wickets to his name. There you go, the purple cap on the head of Yogesh Sharma. बहुत ही अच्छे टाइम पर आप का फॉर्म पीक कर रहा है. अब कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में मेरे ख्याल में आपका क्वालिफायर नंबर 1 खेलोगे. यू आर द प्राइम बॉलर. आप टीम का हुक में इक्का हो और लास्ट लीग मैच
में बढ़िया फॉर्म जताया, पर्पल कैप आपके पास आई, तो ये कॉन्फिडेंस आपको क्वालिफायर नंबर 1 में लेकर जाना है और अच्छी छाप छोड़नी है। ज़रूर, मैं आपकी इस बात पे ज़रूर ध्यान रखूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा टाइगर्स को, बहुत अच्छा खेले आप। और कोई अगर टीम थी प्रसाद भाई की जिन्होंने हमें कम रन में रोका था, उसके बाद आज आपके साथ खेल के बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कैप के बारे में ये कहूँगा कि इतनी विकेट लेने के 2 रीज़न है। एक तो मेरे कैप्टन को मुझ पे इतना भरोसा है, और दूसरा ये आदमी हमेशा मुझे बोलते रहता है तेरा डांस देखना है तो विकेट ले। तो मुझे इसको डांस दिखाने के लिए विकेट एक तो लेना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा हमारे जो फील्डर्स है, ऑसम सर। आज तो मैं राजेश गाडगिल, योगेश और उसके साथ एक आदमी और है अमित भाई, हेड्स ऑफ सर। आपने जो आज मतलब आज हमारा अगर हम जीते हारे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस मैच में भी उन्होंने जो आपने अपना 100 नहीं 200 नहीं 1000% दिया, आई एम रियली हेड्स ऑफ टू यू यार। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबकी वजह से हमारा हौसला बढ़ता है। हम विकेट लेने के लिए साकेत भाई है और विजय भाई पीछे से एक भी लूज बॉल अगर गिरा तो ए बाबा हाफ डाल फुल डाल ये कर, तो वो थोड़ा सा रहता है दिमाग में। थैंक यू वेरी मच। योगेश शर्मा, अगर हारते तो फर्क पड़ता, वो बेदाग सफर पे दाग लगता, तो ये आत्मविश्वास आपके साथ है। अब समय हो चुका है कि मैन ऑफ द मैच के विनर को मंच पे बुलाए, इनवाइट करते हैं सिद्धार्थ गुहा। 2 विकेट से लिए और 9 गेंदों में 14+ रन्स बनाए। अच्छी बात है कि एक नए प्लेयर को ये मैन ऑफ द मैच का खिताब मिलता हुआ, तो सिद्धार्थ गुहा जैसा भी एक नया प्लेयर टीम चैलेंजर्स के खेमे में अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ, और एक पॉजिटिव कलेक्ट किया है हेमंत मोहिते ने। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिद्धार्थ? It's good to see new players coming up the horizon. Siddharth, it's lovely to see somebody like you coming up on the stage and collecting the MOM award. You come from a camp that is on an absolute high team challenger. So good contribution. You'll be happy as you move into the qualifier number 1. Yeah, thanks. It was a great feeling, and thanks to the captain for giving me this chance. Thank you, man. A few words. I would like to just keep continuing with the good work. You got to add anything, Kaushik bhai? Okay. With this, we come to an end of match number 40. The round robin league format is over, and it's time for us to get into the business end of the tournament. So yes, with this, we wind up the innings. Thank you. Good night. God bless. Take care. yo, 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 yo.